Hello and welcome to this special edition of Wilderness Days. Let's start the show by focusing on somebody who has become a legend in his lifetime. His wildlife photographs have appeared in magazines and newspapers across the world, and his thorough knowledge of the jungle lore would surely make any wildlifer envious. We are talking about Kuttapan. In several national parks and sanctuaries in India, a trained elephant carrying tourists on a jungle safari is a fairly common sight. So common, in fact, that we often do not give a second thought to it. Getting atop an elephant can be a bit tricky though, but once you are there, and it starts its lazy pace, the magic of the Indian jungle starts unfolding. And if a tiger is your aim for the day, then nobody can bring you closer to the big cat than an obedient elephant. But what about the Mahalth, the man who controls the elephant? Ever gave a second glance to him? Now, imagine a Mahalth who is so intensely absorbed in the forest that he does not miss out on anything, and who has been taking photographs of the jungle and its animals for well over 3 decades. He is E.A. Kuttapan, the legendary Mahalth of Bandhavgarh. Today, Kuttapan is as famous as the national park itself. Kuttapan has a really large collection of wildlife photographs, more than 50,000. During the past 25 years, there is not a single tiger of Bandhavgarh whose life cycle he has not captured with his camera. And his photographs have appeared in many international newspapers and magazines. Even now, people who write coffee table books on Indian wildlife invariably turn to Kuttapan, requesting him for his photographs. This is how a normal day starts with Kuttapan, the Mahalth and his elephant out in the jungle. The mission is simple, but not easy: to locate a tiger. And often he has to spend several hours in different terrains to come face to face with the big cat. Finding the exact position of a tiger in Bandhavgarh is important on 2 counts. It helps forest authorities know for sure that their tigers are safe. And it aids the tourists to move to the right spot. Today, Kuttapan is lucky. For 3 hours, he has been chasing the Mirchani tigress.
named so because she occupies the Mirchani area of the forest. We caught up with Kuttapan one evening. Here is a man for whom Bandhavgarh is no less than a pilgrimage. And in his daily jungle journeys, Kuttapan's elephant is his most valuable ally and friend. Not many people realize the all-important symbiotic relationship between a trained elephant and his mahout. Kuttapan remarks with a twinkle in his eyes. आपने बहुत काम किया हाथियों के साथ आप रहे, कुछ बताइए किस तरह का रिलेशन आपका रहा इन हाथियों के साथ? हाथियों के साथ कम से कम सन 1971 से मैं बोरी में ड्यूटी कर रहा हूँ, पचमढ़ी में। 76 में बांधवगढ़ में आया हूँ। हाथी के रिलेशन जैसे एक माँ बाप अपने बच्चे को पालते हैं, इस तरह से उसका पालन पोषण होता है। जैसे उनको बचपन से उसको लेके, अगर बचपन में अगर नहीं है, बड़े हाथी मिल गए, उसको सिखाना है, उसको नहलाना है, धुलाना है, चारा पत्ती, रोटी और उससे काम लेना है। तो मतलब उनको एक बच्चे को जैसे माँ बाप सिखाते, पैदा करते, बड़ा होते हैं, उसके बाद में वो अपने से काम करने लगते हैं। इनसे करवाने पड़ते हैं, इनको बताने पड़ते हैं काम करने के, तो वो करते हैं काम। कितना मुश्किल है ये काम या कितना आसान है? बहुत कठिन काम है। अब कठिन काम परिश्रम करने के बाद में फिर वो आसान हो जाते, फिर हम जो काम बताएगा वो करने लगते हैं, पर उनको करवाने पड़ते हैं उनसे, तो वो काम करते हैं। जैसे नहलाना है तो उनको नहलाने पड़ते हैं। जैसे बच्चे जब बड़ा हो जाते हैं तो बच्चा अपने से नहा लेते हैं, मगर हाथी की जो है उसको नहलाने पड़ते हैं, उसका सेवा करने पड़ते हैं। उम्र भर उसको सेवा करना पड़ता है, क्योंकि उसको नहलाने पड़ता है, वो रोटी खिलाने पड़ते हैं। कभी कोई छुट्टी नहीं मिलती उसके लिए। 2 आदमी को ड्यूटी लगा है, मगर 2 आदमी छोड़ कर नहीं जा सकते इनको। 1 आदमी जा सकते, 1 आदमी तो उनको साथ हमेशा बने। He is very happy and contented in Bandhavgarh, says Kuttapan. And the decades he has spent here have been truly memorable. But he is also sad that not many new people are opting for this unique profession. And the age-old art, yes, it is art, he insists, is dying out fast. बांधवगढ़ में ये करीब जैसा हम रिटायर हो गया, हमारा तो खानदान कोई नहीं है। अब दूसरा माहौत रिटायर होगा, उसके भी कोई नहीं है। तो ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इनके बाद में जो सीखते हैं उनको एक्सपीरियंस कम होता है, उनकी चीज़ की जानकारी नहीं रहती है। तो ऐसे लोकल आदमी को पकड़ के हम रखा है, वो हाथी के साथ काम कर रहा है। कुछ दिन काम किया, अच्छा काम कर रहा, हाथी सीखा है, वो सीखे हाथी में तो काम कर लेंगे, नया काम सीखने में उनको टाइम लगेगा। We also took a peek at Kuttapan's mammoth collection of wildlife photographs,
and were truly startled. Here is Sita, the most famous tiger of India and also the most photographed. It is a well-established fact that Sita's successive litters of cubs were instrumental in sustaining the tiger population of Bandhavgarh. And it is thanks to her that the Tala range of the park today has one of the highest tiger densities anywhere in India. And this here is Charger, another celebrity tiger which was a big draw for people and wildlife photographers from all over the world. These here are the other notable tigers of Bandhavgarh: Bitu, Mohini, Baka, Kuttapan recalls several interesting encounters with the big cats of Bandhavgarh, and the most vivid is his close brush with a man-eating tiger. कुट्टपन साहब, आप अपने जंगल जीवन को अगर आप जब देखते हैं, इतने सालों से आप हैं, कुछ बताइए, कुछ ऐसे संस्मरण जो आपको याद आ रहे हैं, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें। वो तो एक बार आदमखोर शेर में हुआ था मेरा। वो क्या हुआ? तो हम देखने गया था, पहले सुबह ट्रेकिंग करने जाते 5 बजे, ये देखने गया तो शेर बैठा तो पत्थर के ऊपर, हम देख नहीं पाया था। आदमखोर तो वो एकदम छलांग मार कर कूदने के उसमें आ गया रहा। तो वहाँ इतनी देखा था, इतनी जल्दी बांस का पेड़ पलटा के उसके ऊपर गिरा दिया, वो भाग गया। और भागने के बाद वो आगे हम पीछे गया है, एक औरत को मार दिया उसने। ओहो। यहीं पर बगल में बांधवगढ़ की बात? बांधवगढ़ में उसने 8 आदमी खाया पर। अच्छा। पहले यहाँ बाघ था, जब हम सन 76 में आया था, यहाँ करीब 10-12 बाघ था पूरे बांधवगढ़ में। पूरा बांधवगढ़ में। तो उस टाइम किल बंधवाते था देखने के लिए, हफ्ता में 1 किल बंधवाते था सरकार, तो वो किल पर दिखाते था। तो वो धीरे धीरे उनको आदत पड़ गई, उन्हीं के परिवार ऐसे आगे बढ़ते जा रहा है। वो उन्हीं के मतलब पूरा परिवार है, चल रहा है। जो वो 10 बाघ 1976 के उसी का परिवार चल, जिनको आदत थी, आदत था, उसी का परिवार आज भी चल रहा है। आपको लगता है कि उसी वजह से ये आदत जो है इन टाइगर में है, उस परिवार की वजह से आदमियों को पास से देखने की, जो डरते नहीं है। बाकी शेर तो भग देते। आप बात कर रहे हो सिर्फ ताला जोन की? ताला जोन की जैसे शुरू से सन 76 से हम जैसे बफलों के किल बंधवा कर दिखाते था, उन्हीं के पूरा रिलेशन चल रहा है अभी बांधवगढ़ में। पूरा जितना अभी बचा है सब उन्हीं की, कोई नाती है, कोई पोती है, कोई माँ है, इस तरह से चल रहा है। Interestingly, some of the most camera-friendly tigers in India can be found in Bandhavgarh. And there is a strong reason for this, explains Kuttapan, who has been closely observing the tigers of the Tala range for the past 26 years. ताला जोन की जैसे शुरू से सन 76 से हम जैसे बफलों के किल बंधवा कर दिखाते था, उन्हीं के पूरा रिलेशन चल रहा है अभी बांधवगढ़ में। पूरा जितना अभी बचा है सब उन्हीं की, कोई नाती है, कोई पोती है, कोई माँ है, इस तरह से चल रहा है। A man of simple tastes, Kuttapan nevertheless has one unfulfilled desire. अब ये बताइए, अब जैसे आप जल्दी ही रिटायर होने जा रहे हैं कुट्टपन जी, आप कुछ सोच रहे हैं अपने इन संस्मरणों को, अपनी जो आपने इतनी एक शानदार फोटोग्राफी करी है, इसको किसी फिल्म के द्वारा या किताब के द्वारा कुछ करने की? मेरे को एक ही इच्छा है, लोग बाग तो 10 दिन के लिए, महीना भर के लिए आते हैं बांधवगढ़ में, वो अच्छे से अच्छा किताब लिखते हैं। तो मैं भी इतना साल की एक्सपीरियंस है मेरे को, तो मैं भी सोच रहा है एक आटो किताब लिखूँ, कम से कम नाम हो जाए बांधवगढ़ की, हमारा भी नाम हो, बांधवगढ़ का भी नाम हो। लोग बाग किताब पढ़ेगा तो कम से कम याददाश्त रहेगा, हाँ कुट्टपन करके कोई रहा। और किताब अगर नहीं रहेगा तो कोई नहीं जानते रिटायर होने के बाद।
Looking at the photographs, Kuttapan becomes a child once again. He explains in great detail how each photograph was clicked and how these tigers became so vital for the national park. And in all his wonderful jungle experiences, Kuttapan's elephant remains his most important companion, almost an active collaborator in his accomplishments. But taking care of an elephant is no easy task, points out the elephant man of Bandhavgarh. A trained elephant is also like a kid who doesn't do anything on his own. Even a simple ritual like bathing cannot take place without the mahout's assistance. And when in its camp, it has to be fed by hands, a time-consuming process. But this is how trust, the most important bond between the mahout and his elephant, develops. Kuttapan is due to retire in a short time. With a tinge of sadness, he admits he would miss his daily journeys in the forest, the animals and trees of Bandhavgarh, which give him so much joy, as well as his beloved elephant. ये बताइए, आपका इतना समय पिछले कई दशक हाथियों के साथ बीते, अब रिटायरमेंट के बाद आपके एटलीस्ट कोई सरकारी हाथी तो आपके पास नहीं होगा, तो ये जो एक बिछड़ना हो जाएगा हाथियों के साथ, तो उसको आप कैसे लेंगे? क्या करेंगे साहब, वो तो उम्र के अनुसार तो चल छोड़ने पड़ते हैं, सरकार का तो नियम है। तो वैसे तुम अपने से तो छोड़ नहीं रहा, सरकार तुझे 60 साल बाद में तू रिटायरमेंट देते हैं, भाई उनको भी तकलीफ होगा, जानवर को भी थोड़ा बहुत। वही रोज़ जो चलाने वाला वो नहीं मिले, दूसरा बदल के मिल जाते। जैसे आप गाड़ी में वो डेली जो ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं उसको मालूम है इसको क्या तकलीफ है, कौन सी बीमारी है गाड़ी में। अगर ये तो जानवर है, इनको तो हर चीज़ को तो मतलब उनकी याददाश्त तो रहते ही है। तो नया आदमी रहते हैं तो वो उस हिसाब से काम करेंगे, पुराना जो रहते हैं उनको मालूम है इनके साथ तुम्हारा अच्छा मतलब काम जानते हैं, काम हमसे कराते तब वो काम कम करेंगे। वो उस हिसाब से जो हम चाहते हैं वो उस हिसाब से दूसरों से ना हो। Of course, for many of us, Bandhavgarh will also not remain the same without Kuttapan. Before we wrap up this special show, let's take a look at the video of the week. So that's all we have for today. Next week we'll come with many interesting stories. We'll tell you how a new methodology is being used to count elephants in Uttarakhand.